Hello everyone, good morning. Hello Abhinay, Ashad, Atir, Janvi. I hope you all are well. कैसे हो अभिनय? आप थे कल क्लास में? अच्छा नहीं थे. ठीक है, उसको देख लिया था. Not been feeling well. Okay, no problem. But have you watched the last class? It is important because that is tomorrow will be the sequence of the yesterday class. Sorry, today will be the sequence of the yesterday class. Sunita had joined us. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Good morning, Sunita. Okay, no issue of that. That's no problem from my side. Yes, what we discussed yesterday, Janvi, can you recall? Can you recap just 5 minutes? Yeah, Janvi, are you there? Atir, Atir, yes. Atir, can you recall yesterday class? हमने क्या डिस्कशन किया था? नहीं, Atir. Actually, we discussed two ideas, historical materialism and dialectical materialism. Yes, Atir, Sunita, वो भी चला गया. Atir भी नहीं है. Good morning, Atir. Are you there? Can you unmute yourself? जी सर. कल हमने क्या डिस्कस किया था? सर कल हमने डिस्कस किया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म. ये क्या है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म? सर इसका सर मतलब कि हम बोले तो सर इसमें लेनिन ने मतलब कि बोला था कि जैसे कि ये है इस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म ये मार्क्स का आइडिया था, तो इसीलिए लेनिन ने इसे वो बोला था द लिविंग सोल ऑफ मार्क्सिज्म एंड फंडामेंटल थ्योरेटिकल टूल्स ऑफ मार्क्सिज्म. राइट, क्योंकि ये हमें एक ह्यूमन सोसाइटी को समझने में हेल्प करता है. टूल्स देता है. यस, इट्स अ मैथड. कैसे? बिकॉज सर डायरेक्टिक मटेरियलिज्म जो है ये मतलब कि जैसे कि हेगल ने बताया, लाइक ही मेंट द प्रोग्रेस ऑफ आइडियाज बाय मींस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टुवर्ड्स एब्सोल्यूट आइडिया सर. राइट. तो लाइकवाइज इसीलिए लाइक ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन विद इन द आइडियाज इसमें लाइक there is a negation of old ideas and the creation of new ideas. Okay. और इसी दोनों सर when these two things collide, then a new thing new development take place.
तो फिर इसके बाद सर हमने पढ़ा था एंगल्स का जो एंजल्स का एंडी ड्यूरेंट जो है उसने like he represented final stage of dialectical materialism and fundamental law of dialectical materialism जिसमें था unity of opposition which says that the unity of concrete reality is the unit of opposition. And second was negation of negation. Okay. In the clash of opposite, one jab sir when two thing in the clash of opposite, one negates and in turn negated by the higher level. मतलब कि सर जो higher level रहता है वो मतलब कि नीचे वालों को दबाने का and negate करने का कोशिश करता है सर अपने को छोटे से. नहीं, वो तो हम मटेरियल आप ह्यूमन लाइफ में ये फिलॉसफी है. ये कहता है कि एक आइडिया निगेट करता है दूसरे आइडिया को, ये भी इसको निगेट करता है. दोनों निगेटेड होता है एंटीथेसिस से, हाई लेवल ऑफ आइडिया से, और इसी तरह मूवमेंट होता है हिस्ट्री का. यही तो हीगल कहता है. जी सर. देन सर थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी. लाइक इसमें सर बोले तो थीसिस फ्यूडलिज्म और एंटीथीसिस कैपिटलिज्म, ये दो चीज जब सर लाइक अपने आप एक दूसरे से ये अपोज होता है तो फिर एक न्यू कम्युनलिज्म पैदा होता है, सिंथेसिस. कम्युनिज्म, नॉट कम्युनलिज्म, कम्युनिज्म. आपने कम्युनिज्म लिखा है क्या? कम्युनिज्म, राइट? मैंने कम्युनिज्म लिखा. ठीक है. तो हीगल ने आइडिया लगाया, ठीक है, और कहा कि आइडिया डायलेक्टिकल पाथ में मूव करता है. और मार्क्स ने क्या कहा? इट्स अ मैटर व्हिच मूव्स इन डायलेक्टिकल पाथ. ओके, मेथड उन्हीं का लिया और बट थियरिटिकल ये बदल दिया कि आइडिया मूव नहीं करता, बेसिकली मैटर मूव करता है. हम एक मटेरियल कंडीशन से दूसरे मटेरियल कंडीशन में एंटर करते हैं. ठीक है? यस सर. मार्क्स के लिए आइडिया क्या है? आइडिया इज अ बेस्ड ऑन द मटेरियल कंडीशन ऑफ द पीपल. जब जिस इंसान के जिस हिसाब से मटेरियल कंडीशन होता है उस हिसाब से उसके आइडिया आते हैं, राइट? जी सर. चलिए, अब हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म ने क्या बताया था? जानवी को बोल दें. जानवी, आर यू देयर? Janvi, yes. Yes, sir. Yeah, can you talk about historical materialism? Okay, so basically in historical materialism, which is also the materialistic conception of history, it is basically an application of direct materialism to the study of society. Yeah. So in this, Marx says that history is a movement of material condition, and it is progressive. That it means that there are changes from one stage to another in history. So it is basically it is a division of labor. Society, he says, is a division of labor. Right. And the first society, as we saw earlier, it used to be a primitive society, which then eventually it became a hunting gathering stage. People used to hunt and gather, and then later on more changes developed, and people started cultivating and domestication of animals. So these developments happened. So it was another stage, and then people started the society in which the effort was conditioned by the material conditions. So basically he says that history so he says that history is nothing but the changes in material conditions in the due course of time, as we discussed, and it is irreversible process because from time to time changes do happen because of the economic factors and needs. So one example we saw was that the primitive society, which had no class, developed into the agricultural society, which had a class and the master and slave division. Then the feudal society came, which had a class and the landed and serfs. And then the capital society eventually, which obviously had the class and the bourgeoisie and the proletariat divisions. So basically, this is how Marx and Engels both saw the entire history, which was a struggle between the different classes. And they also said that all past history was the history of class struggle. So
and that class struggle depended on the material conditions and the needs of that particular time or stage. So these classes, he says, are always product of the economic conditions. Whatever the need is, whatever the economic factors are, it is on that basis that it forms. The social, political, legal institutions, all of these develop according to the economic needs. So this approach is known as the base and superstructure. That's what we did. So yeah, exactly. Exactly. So what he did, the economic structure, economic structure is prior. Economic structure of any, a period of history is prior. And this economic structure reflect the politics, media, right? That we talk about media, then, education, then the state, even the family. This all depends on economic structure, right? What he called economic structure as a base, right? In each stages of history, the economic structure determines the, politics, media, education, family, state, etc. So economic structure is the base, right? Economic structure is the base, right? And everything that we see, that is the reflection of the economic structure, right? Remember Plato as well as Hegel, what he said, idea is a real thing, and everything we see, either economic structure, family, state, right, which is reflection of the idea. No, Marx said economic structure is the basic, right? In every stage of history, economic structure is the basic, and everything is reflection of the economic structure, right? So it depends on economic structure, and he called economic structure as a base, right? And all reflection like politics, media, education, state, family, it constitutes superstructure, right? So we have base, like you can like base and superstructure. Are you getting my point? कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिस किया है. Yes, Abhinav, come at 8, be on time. Everyone, this is my humble request. क्योंकि छूट जाता है या टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आया बेस सुपर स्ट्रक्चर क्या है? हर स्टेज ऑफ हिस्ट्री पे जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस समय का, राइट, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, उसी को उसने बेस कहा. वो बेसिक है. और जितने भी आपको दिख रहे हैं स्टेट, लॉ, मीडिया, ये सारा क्या है? एजुकेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, ये रिफ्लेक्शन है इसका. किसका? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का, राइट? और ये एक सुपर स्ट्रक्चर बनाता है. और ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारा क्या है? बेस. इसी को हम बोलते हैं बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर. गॉट द आइडिया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सुनीता सर मुझे सर यूनिटी ऑफ अपोजिशन मतलब नहीं समझ आ रहा. अच्छा, यूनिटी ऑफ अपोजिशन में मतलब नहीं समझ में आया. अच्छा सर, नेगेशन मतलब कि उसमें यही ना कि एक आइडिया दूसरे आइडिया से क्लैश करेगा, फिर जो न्यू आइडिया एक दूसरे का अपोजिट है. हाँ, नेगेशन मतलब होता है कि अरे मैं नेगेटेड, इफ आई नेगेट यू मतलब मैं तुम्हारे आइडिया को नहीं मानता. दो भाई में झगड़ा जब होता है, ठीक है, तो वो कुछ आइडिया देता है, वो कुछ आइडिया देता है, एक दूसरे को नहीं मानते, ठीक है. और फिर क्या होता है कि दोनों में बीच में जब क्लैश होता है तो तीसरा एक आइडिया निकल के आता है. जब तीसरे लोग, बड़े लोग पंचायत के पास बैठते हैं तो इनके भी गलत आइडिया को हटा देते हैं, इनके भी गलत आइडिया को एक नया आइडिया देता है, राइट, हायर लेवल ऑफ आइडिया, ठीक है. ये है यूनिटी ऑफ अपोजिशन. यहाँ पर
इन दोनों को मिल गया, ये दोनों के सत्य जो है, ट्रुथ पार्ट जो है वो मिल गया, कॉन्ट्राडिक्शन हट गया यहाँ से। ये क्यों नहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है? क्योंकि इसके आइडिया में भी कॉन्ट्राडिक्शन है और इसके आइडिया में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। मान लीजिए ए और एक का, ए डैश का भाई है, तो समझ में आया? यस सर, समझ गया ना? तो ये जो हायर लेवल ऑफ हाइट, इसी को यूनिट ऑफ अपोजिशन बोलते हैं, राइट? और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्वालिटी, क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। ये भी अपना इतना सारा क्वांटिटी आइडिया लाता है, ये सारा लाता है, बट जब हम पंचायत के पास बैठते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसके आइडिया को हटा देते हैं, कुछ आइडिया को, इसके गलत आइडिया को हटा करके एक नया आइडिया देता है। ठीक है, ठीक है। चलिए, जब ये बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर आपको समझ में आया, तब अब क्या है कि ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम बेस भी बोलते हैं, राइट, और इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं मार्क्स अपने टर्म में। क्या बोलते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन। जब आप मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, प्योरली मार्क्सिस्ट टर्म है, राइट, किसने नहीं दिया, ठीक है, इवन बेस भी मार्क्सिस्ट सिस्टम है, इसको मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और मार्क्स कहता है कि ये मोड ऑफ प्रोडक्शन है। समझ में आया मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है जानवी? यस एवरीवन, अभिनय, बेस को ही मोड ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और बेस किसको बोलते हैं? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। किसी भी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो इसका बेस है ना, आधार है। और जो संरचना है ऊपर स्ट्रक्चर, वो हमारा हर तरह से जो आपको दिख रहा है, इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन हो या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो या लीगल इंस्टीट्यूशन हो या मोरल इंस्टीट्यूशन है, इवन मोरल, morality is defined by the economic structure of that particular time, right? So इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम ही बेस कहते हैं और बेस को ही हम मोड ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, जब ये समझ में आया तो देखिए, मार्क्स का जो मेथड है ना, बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट है, आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि है क्या है। सर फ्राइडे को मैं करोल बाग आ रहा हूं जी, मोस्ट वेलकम। ठीक है, कौन सी क्लास है क्या? कौन सी? इकोनॉमिक्स का? कितने बजे टाइमिंग? क्लास ना करा दे PSIR से, सार्थक ऑलरेडी रिकॉर्ड ले रहा है 4:30। अच्छा, नहीं मैं मिल जाऊंगा यहीं पे, कोई टेंशन नहीं। थोड़ा आप जल्दी आना, जहां ऑफलाइन क्लास होता है मैं थोड़ा उससे थोड़ा दूर है, हमारा 2 ऑफिस है करोल बाग में। आज देखो, आज मैं कहीं और से ले रहा हूँ, बैकग्राउंड देख सकते हो, कल मैं कहीं और से ले रहा था। कल जहां से ले रहा था वहीं हमारा ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और यहाँ पर हमारा ऑनलाइन, प्योरली ऑनलाइन। चलिए, अच्छा, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन को इसने 2 भागों में बांट दिया। कहा कि इसमें फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। सिंपल बताया मैंने आपको कि मोड ऑफ प्रोडक्शन को उसने 2 भागों में बांट दिया। क्या? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एक को फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन कहा, दूसरे को रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कहा। अच्छा, अब फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? ठीक है, अब देखिए क्या है कि प्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। किसी भी फैक्ट्री में मान लीजिए आप ऑनर है या आप वर्कर है, मान लीजिए, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चाहिए बताइए। फॉर प्रोडक्शन व्हाट डू यू नीड? लैंड, यस, रॉ मटेरियल, right? You need machine. Okay, Janvi, you need a machine. Now human capital. Yeah, we'll come to later. We will come to later, right? You need transport. माल कैसे धोएंगे? You need transport, right? अब मुझे ये जो बताइए कि ये सब चीज, मशीन और ट्रांसपोर्ट, ये क्या केवल ह्यूमन लेबर के संभव है क्या? अगर ह्यूमन ना इसमें टच करे तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, राइट? नहीं बढ़ेगा। ओके, आप देखिए, अब ये जो हमारा हो गया मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन। ये हमारा लैंड, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, मशीन। अब आपने ह्यूमन कैपिटल की बात कही है, प्लस ह्यूमन स्किल और ह्यूमन कैपिटल मैं जोड़ देता हूं, बट ह्यूमन कैपिटल उसने वर्ड यूज नहीं किया, ये अमृत सेन का वर्ड है तो हम नहीं लेते हैं। मैंने ह्यूमन स्किल्स वर्ड यूज किया, राइट, और एक्सपर्टाइज। ताकि अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर के हमारे बनाते हैं फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है हमारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन स्किल्स आएगा। तो कितना बड़ा भी मशीन हो, जब तक आप बटन नहीं ऑन करेंगे वो नहीं चलेगा, राइट। सो ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आपने लेबर भी कहा था, मैंने उसको भी इग्नोर किया था, राइट। सो ह्यूमन लेबर इज एसेंशियल, राइट, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, right, and what he called forces of production. Got the idea? कुछ कंफ्यूजन है? इसने क्या कहा? अभिनय, क्लियर है? ओके, अगर क्लियर है तो ठीक है। निकिता, सुनीता, क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। अब इसने कहा कि अगर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को ऑन कौन करता है, राइट, ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन भी प्रोड्यूस करता है। कैसे? मान लीजिए कि अगर ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एक इंसान के हाथ में है, यानी कैपिटलिज्म है। अगर कैपिटलिज्म के हाथ में, कैपिटलिस्ट के हाथ में है, बुर्जुआ के हाथ में, तो रिलेशन कैसे होगा? यहां पे क्लास पैदा होगी कि नहीं होगी? मालिक होगा और नौकर होगा। होगा ना कि नहीं होगा, मुझे बताइए। ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली ऑन कौन करता है? अगर कैपिटलिस्ट ऑन करता है तो क्लास होगा पक्का। जब प्राइवेटाइज्ड होगा, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, तभी क्लास होगा। याद कीजिए रूसो को, क्लास कब आता है? जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आती है, उससे पहले कोई क्लास नहीं थी, राइट। इवन मार्क्स कहता है कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में कोई क्लास नहीं था, राइट। प्रिमिटिव सोसाइटी में क्लास कब आया है? जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जन्म हुआ है, राइट। When private property came into being. Remember Rousseau? He was actually purely he borrowed from Rousseau. कि पहला इंसान जो आया और कहा कि ये एक सर्कल लैंड खींच दिया और कहा कि ये मेरा लैंड है, राइट। वो पहला ओरिजिनेटर है सिविल सोसाइटी का। और उसने लैंड को ऑक्युपाई किया और धीरे धीरे सभी लोगों ने लैंड को ऑक्युपाई कर लिया, राइट। और वहां पे क्लास पैदा हो गई। कौन कौन? हैव एंड हैव नॉट। सिमिलरली ही सेज कि अगर कैपिटलिज्म होगा तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, क्लास होगा। मान लीजिए अगर ये फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन को कौन ऑन करता है? सोसाइटी। अगर सोसाइटी ऑन करता है तो क्या ये क्लास होगी? यहां पर क्लास होगी? मार्क्स सेड नो क्लास। सबने सोसाइटी को ऑन किया है, मतलब सबने ऑन किया है इसको, सब मालिक है उसका, राइट। और सब अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो जितना मेहनत करेगा वो उतना उसको मिलेगा। अभी नीड पे मत जाना, राइट। व्हाट ही सेड कि अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी, एवरीवन विल गेट अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटी। जो जितना मेहनत करेगा वो उसको इतना मिलेगा इनिशियल स्टेज पे, बट बाद में जाकर के क्या मिलेगा? अकॉर्डिंग टू नीड, वो बाद में आएंगे। अब देखिए कि हमारा रिलेशन हो गया, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे हमारा रिलेशन बेस्ड हो गया। इसको उसने कहा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है और इसका जो ऑनिंग है, इट प्रोड्यूसेस रिलेशनशिप, राइट। जब कैपिटलिज्म होगा क्लास होगी, जब कैपिटलिज्म नहीं होगा तो क्लास नहीं होगी, यानी सोसाइटी सोशलिज्म होगा तो क्लास नहीं होगी। यहां पर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बदल जाएगा। सो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज अ रिलेशन अमंग इंडिविजुअल विद इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन। मैंने क्या बोल दिया?
समझ में आया? रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन नहीं ना, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज ए रिलेशन अमंग इंडिविजुअल विद इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन। प्योरली मार्क्सिस्ट वे में मैं बात कर रहा हूं, मार्क्सिस्ट लैंग्वेज है ये, राइट? अच्छा, मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखिए, इसको बोलते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, बेस को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। अब ये कह रहा है कि ह्यूमन रिलेशन किस पे बेस्ड करेगा? मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। अब आइए हम बात करें प्रिमिटिव कम्युनिटी, प्रिमिटिव सोसाइटी में, राइट? यहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग है। अब आइए हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, यहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग है। आते हम फ्यूडल सोसाइटी में, यहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग है। हम आते हैं कैपिटलिज्म में, यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग है। फिर हम आते हैं सोशलिज्म में, यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग होगा। अब वो कहता है कि ह्यूमन रिलेशन, इंसानों के बीच का जो रिलेशन होगा, राइट, वो किस पे डिपेंड करेगा? मोड ऑफ प्रोडक्शन पे। देखिए यहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग है, यहां पर कोई क्लास नहीं है, इक्वालिटी होगी, राइट? अब देखिए एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, यहां पे मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग हो गया, सबने लैंड घेर लिए, तो यहां पर कौन से दो लोग हो गए? हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है? यहां पर मास्टर हो गया और स्लेव हो गए, स्लेव। अब यहां पर मोड ऑफ प्रोडक्शन अलग हो गया, राइट? वो ज्यादा डेवलप कर गया और बड़े बड़े लैंडेड क्लास हो गए, जिसको बोलते हैं लैंडेड क्लास। और वो हो गया बॉन्डेड लेबर, सर्फ। माइंड इट, स्लेव तो स्लेव था, लेकिन वो उसका जो कंडीशन था, इट वाज बेटर देन द सर्फ। एनीवे, तो यहां पर मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, रिलेशन बदल गया। कैपिटलिज्म में मोड ऑफ प्रोडक्शन बदला, यहां पर भी मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया? यहां पर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन बदल गए, क्योंकि यहां मशीन आ गया, ह्यूमन लेबर आ गए, राइट? तो यहां पर भी रिलेशन बदल गया, कैपिटलिज्म और सॉरी बुर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट। अब सोशलिज्म में मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा, यहां पर भी रिलेशनशिप बदल जाएंगे। वही मैंने कहा कि रिलेशन अमंग इंडिविजुअल, रिलेशन अमंग ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द पर्टिकुलर टाइम। अब आया समझ में? Yes, Ashad, Nikita, did you get the idea? What Marx trying to say? It's no difficulty at all, but of course needs explanation. That I did. Nikita, you get it? मोड ऑफ प्रोडक्शन से घबरा मत जाना। मोड ऑफ प्रोडक्शन मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह से सोसाइटी में रिलेशनशिप होगी। यही तो कहता है वो, जिस तरह से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, उसी तरह से सुपर स्ट्रक्चर होगा, राइट? तो इंसानों के बीच का रिलेशन डिपेंड करता है उसके मोड ऑफ प्रोडक्ट यानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे। सुनीता, समझ में आया? अब मैं लिखवा दूं थोड़ा ये सारी चीजें। डन, लिखवा दूं? ओके, चलिए। हमें दो चीज पढ़ना है, 1 घंटा है हमारे पास। आज मैं सोच रहा हूं क्लास भी पढ़ा दूं, क्लास स्ट्रगल और ये, ठीक है? मतलब एक तरह से सब कुछ डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी। यस यस यस, दैट इज मार्क्सिज्म। यस अभिनय, आपने कल छोड़ दिया था ना, मार्क्स को बोलते हैं हम इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। उन्होंने कह दिया कि इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग, राइट? द स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी डिटरमाइंस एवरीथिंग। क्या होता है आखिर? स्टडी क्या है पता है? चीजों को कॉम्प्लेक्स बना दो, फिर उसको सॉल्व कर दो धीरे धीरे, ठीक है? अदरवाइज क्या है, सेक्युलरिज्म लो, बात बहस कर लो, बस हो गया भाई, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। बट ऐसा तो नहीं है ना, फिर हम कैसे सेक्युलरिज्म को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? राइट, चलिए
Janvi, you got the idea? I need just explanation. But I just need to dictate the explanation. Got the idea, concept? अब मैं लिखवा दूं one by one. Okay, very good, very good. Now write base and superstructure. Base and superstructure. You write, in each stage of history, the material conditions determine money, social relation, as well as social, political, and legal institution. In each stage of history, the material condition determine social relation as well as social, political, and legal institution. Therefore, economic structure is real, and everything ये मुझे DPSP में क्यों लग रहा है कि like court argues to secure that? थोड़ा सा yes, वही base and superstructure हमने लिखा था base and super. Economic structure is real and everything are mere reflection of that economic structure. Right? Marx थोड़ा से लिखवा देता हूं. बेस वैसे कैसे आपको बता दूं कि बेस आप जानते हो, सुपर स्ट्रक्चर आप जानते हो, बस मैं केवल आपको रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दिखा देता एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन दिखवा देता, बट थोड़ा सा ऐड करने के लिए. मार्क्स कॉल्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एज बेस. सर ये क्या है? रियल एंड economic structure is real and everything are mere reflection of that economic structure. Okay sir, thank you sir. Okay. Marx called economic structure as base and social, political and legal institution as superstructure. ठीक है, अब लिखिए, बना दीजिए हमारा एक फिगर, बना दीजिए हमारा बेस का और सुपरस्ट्रक्चर का. You can like put like this, ऐसे भी होते हैं. एरो 1 मिनट, गड़बड़ हो रहा है. कहीं पे आपको ऐसे पिक्चर मिल जाएंगे, सिंपल बना देता हूं. जैसा बेस होगा वैसा ही सुपरस्ट्रक्चर होगा. ठीक है, अब लिखिए हमने क्या डिस्कस किया था, मोड ऑफ प्रोडक्शन. हाँ लिखिए, मार्क्स
For Marx, economic structure or base is the mode of production. Mode of production. It consists forces of production and relation of production. डायग्राम पे आएंजी लीजिए, जो बेस होगा वैसे ही सुपर स्ट्रक्चर होगा, और ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है. Then, yeah. For Marx, economic structure or base is the mode of production. It consists forces of production and relation of production. Now लिखिए forces of production. Forces of production क्या है? देखिए, in order to produce we need क्या क्या बताइए? Machine, transport, right, and tools. But these tools or machine cannot work, cannot be functional without human labor, skills, expertise. हर जगह स्किल लगाने की जरूरत नहीं होती, कहीं पे बटन दबाने की जरूरत है, इसलिए लेबर कहीं पे स्किल लगाने की जरूरत होती है, कहीं पे एक्सपर्टाइज लगाने की जरूरत होती है, राइट. But this machine cannot be functional without human labor, skills, expertise, right? So, or therefore, forces of production consist, now you can write machine, tools, transport, and human labor. ये हो गया हमारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन. Then हो जाए तो बताइएगा. Okay, what is relation of production? Relation of production, ये दो मेजर है रिलेशन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. लिखिए रिलेशनशिप is determined by the mode of production. The mode of production of the particular time. When there is a capitalism, relation among man is based on class. But when there will be socialism,
there will be no class. यानी रिलेशनशिप बदल जाएगा, relation will change, there will be no class, right? So basically the economic production, you know, the way production happens, it determines the relationship. ठीक है, डन, ये दो चीज समझ में आ गया, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं आपको मिलेगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में से ह्यूमन लेबर को हटा दीजिए, हम लिखते हैं प्रोडक्शन फोर्सेस माइनस ह्यूमन लेबर। समझ में आया? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास क्या था? प्लस ह्यूमन लेबर प्लस टूल्स, मशीन, एवरीथिंग। गॉट द आइडिया? नहीं, मैथमेटिकल लिखा। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि हमारे पास जो भी है, आपने बताया अभी, मुझे पहले बताया था, लैंड है, लेबर है, हाँ सॉरी लेबर नहीं है, लेबर नहीं, लैंड है, हाँ ट्रांसपोर्ट है, राइट, और रॉ मटेरियल है, इस सबको मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, इंसान मीन्स नहीं है मार्क्स के लिए, राइट? ठीक है, इंसान मीन्स नहीं है मार्क्स के लिए, इसीलिए वो कैपिटलिज्म को विरोध करता है। वो कहता है कि बिना ह्यूमन लेबर का कुछ तो होगा ही नहीं, राइट? तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया। बट जब ह्यूमन लेबर इसमें ऐड कर देंगे हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में, तो ये हो जाएगा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन। जब हम ऐड कर देंगे ह्यूमन लेबर, ये हमारा फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ में आया क्या अंतर है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन में? ठीक है सुनीता, ठीक, डन सुनीता, ओके, क्लियर टू यू? अभिनय, इसके बाद कुछ नहीं है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म में बिल्कुल अब कुछ नहीं है, इतना ही था जो मार्क्सिज्म है। तो मुझे भी टेंशन था कि बच्चे समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। एक चैलेंज होता है टीचर के लिए भी कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है, राइट, वेदर स्टूडेंट्स विल गेट इट और नॉट। इफ वी ऐड ह्यूमन लेबर in the means of, then it will become forces of production. Yes, yes Atif, yes Nikita, अगर आप मार्क्स के कैपिटल को देखेंगे ना, राइट, व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन? MOP, इट इज कॉल्ड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस, ऐसे ही मिलेगा ये फॉर्मूला, समझ में आया? मीन्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे ही वो फिलॉसफी पढ़ा था, पर पता नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा पूरे लाइफ में, क्या क्या पढ़ा। he was totally economist, he was, you know, he was a philosopher, he was an economist, he was a socialist, he was a political scientist, right? He changed the entire scenario of the politics. Anyway, got the idea? Now I will move to सोसाइटी। अभी तक तो हिस्ट्री की बात हो रही थी कि हिस्ट्री क्या है, राइट? और हिस्ट्री में उसी में आ जाता है बेस एंड द सुपर स्ट्रक्चर, तो भी बता दिया। फिर बता दिया कि रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उस दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मीन मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। नाउ कम टू द सोसाइटी। अभी तक तो हिस्ट्री हम बात करते थे, अब आइए ये क्या कहता है सोसाइटी के बारे में। देखिए, व्हाट इज सोसाइटी हमने लिखा था, व्हाट इज सोसाइटी, फिर से शुरू करते हैं, राइट? 2 लाइन रिपीट करते, कोई दिक्कत नहीं। आप एग्जाम में मत कीजिएगा, समझाने के लिए जान दी ना, कभी कभी रिपीटेशन जरूरी हो जाता है, नहीं तो अगर शुरू करेंगे लिंक बनाने के लिए, राइट? अदरवाइज व्हाट इज सोसाइटी, मार्क्स ने क्या कहा मुझे बताइए? इट इज ए डिवीजन ऑफ लेबर। फॉर मार्क्स, society is division of labor. Division of labor, or
or the entire mode of production. यही सोसाइटी है मार्क्स के लिए। ये सब आ रहा है आपको हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में भी, बट डिपेंड्स क्वेश्चन क्या पूछता है। हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म पूछता है तो आप बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, जो ये रिलेशन प्रोडक्शन, इसको स्केप कर देना। अगर बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर पूछता है तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर के इसको लिखना। अगर वो हिस्ट्री एंड सोसाइटी पूछता है तो वहां से भी उठाना और यहां से भी उठाना और लगा देना, ठीक है। सो इट्स नॉट की हेडिंग है यस नो, राइट, अलग हेडिंग नहीं है, इस पूरा ज्वाइंट है, एक लंबा स्टोरी है और डिपेंड्स कितने नंबर में पूछता है। अगर 10 नंबर का पूछेगा आपको उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। अगर वो 15 नंबर में आएगा तो उस हिसाब से लिखना पड़ेगा। व्हाट इज सोसाइटी, कल हमने पढ़ा था फॉर मार्क्स। मार्क्स यू नो, आप मुझसे पूछ रहे हो आते, देखियो वेबर के लिए अलग है सोसाइटी, ठीक है, मार्क्स के लिए अलग है सोसाइटी। मार्क्स के लिए है डिवीजन ऑफ लेबर और इंटायर मोड ऑफ प्रोडक्शन, राइट। मैं जानवी का हेडिंग बता रहा था। अच्छा, एंड मैन हैज, यू नो, मैन हैज टू सी ऑन व्हाट कैपेसिटी, मैन हैज टू सी इन व्हाट कैपेसिटी सर सेकेंड लाइन में सोसाइटी इज डिवीजन ऑफ लेबर के बाद क्या है, ऑफ or the entire mode of production. Man has to see in what capacity he is entering into the process of production, into the process of production. वो लेबर है या मालिक है। Man has to see in what capacity he is entering into process of production, right? Class is a real identity. Class is real identity of the person, ठीक है, कि वो बुर्जुआ है या प्रोलेटारिएट है, राइट। देखिए, in capitalism there are two classes only. There are two classes. कौन कौन सा है? Have और haves not. Haves and haves not. ठीक? Other identity, like for Marx, other identity like religion, language, you know, region are superficial. The material interest of these two classes are essentially contradictory. क्यों? वर्कर चाहता है ज्यादा वेज और वर्कर चाहता है लीव। मालिक क्या चाहता है? लीव कम दो और इनको वेज कम दो, ज्यादा प्रॉफिट। So material interest of these two classes are essentially contradictory because one is exploiter and other is exploited. समझ में आ रहा है? Society changes only
society changes only when there is change in mode of production. तो तभी होगा जब मोड ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होगा, तभी समाज में बदलाव आएगा, राइट? और मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव चाहिए तो हमें प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन को भी बदलना पड़ेगा और हमें रिलेशन भी बदलेगा, उसी हिसाब से बदल जाएगा अपने आप, राइट? Right? So the changes is the society changes only when there is a change in mode of production, and when there is a changes in mode of production, right? There is changes in relationship. Changes in relationship, right? And these changes in relationship is the most important indicator, right? The changes in relationship is most important indicator. Of changes. ऐसा नहीं कि केवल मोड में, अगर मोड में बदला, अगर रिलेशनशिप नहीं बदला तो changes, right? Thus Marx said that history changes as per changes in mode of production. राइट? अब हमने देखा कि हिस्ट्री में बहुत सारे स्टेज मार्क्स ने बताया, प्रिमिटिव कम्युनिटी, फिर एग्रीकल्चर, फिर फ्यूडलिज्म, फिर कैपिटलिज्म, फिर सोशलिज्म, फिर कम्युनिज्म। इसने कहा कि दो इंपॉर्टेंट स्टेज है। एक तो है कि प्रिमिटिव प्रोडक्शन जहां पे था, राइट? प्रिमिटिव सोसाइटी, हंटिंग गैदरिंग स्टेज, जहां पर क्रिस्टल क्लियर था कि कोई क्लास नहीं है। और दूसरा है ये कैपिटलिज्म जहां पर हम लोग हैं, राइट? इन दिस कैपिटलिज्म it is crystal clear, there are clear two society and revolution is possible, best way now, right? So he said this conflict may occur between bourgeoisie and proletariat and there may be revolution, right? And who will do revolution? It is a proletariat who will do revolution, right? समझ में आया? वो भी लिखवा ही देता हूं, उसको भी छोड़ूंगा क्यों? देखिए, two changes, इसी में लिख दीजिए, two changes in history are very important. First, primitive society, और इसको मैं बोला primitive communism, where it was crystal clear, that there is no class, right? And capitalism, where it is clear that there is two contending classes, two contending
antagonistic classes. Bourgeoisie and proletariat. राइट अब मैं यहां आगे से नहीं पढ़ रहा हूं, आगे आगे ये था कि रिवॉल्यूशन, वो पहले लिखवा दिया मैंने कि कौन रिवॉल्यूशन करेगा, कुछ भी पूछेगा यू बी एबल टू आंसर इट, राइट. नाउ proletariat is a revolutionary class because they know their own condition and they know what is socialism. Socialism is to distribute the resources. Now I'm talking about criticism. चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया? सुनीता क्लियर है? बहुत चेंजेस होगा. इसी की फिलॉसफी देखो, पूरी रसिया में चेंज ला दिया. पूरी रसिया में सत्ता पलट कर दी. ठीक है, और रसिया नहीं, पूरी आधी दुनिया में सत्ता पलट कर दी. राइट. चलिए लिखिए क्रिटिसिज्म और कार्ल पोपर क्रिटिसिज्म. यहाँ कार्ल पोपर बाबा फिर से आ गए. आप कॉफी आज कोई दिया नहीं यार. आई एम डिपेंडेंट, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट sovereign person. Atik, do you think whether you are dependent and independent and sovereign? But Rousseau said, men are born free, but everywhere he's in chain, right? So अच्छा नहीं मिला है तो ऑफ कोर्स. एनीवे चलिए, कार्ल पोपर्स क्रिटिसिज्म देखिए. दो Marx called his historical materialism scientific, but he was criticized by, or he was criticized by कार्ल पोपर. अच्छा, कार्ल पोपर की किताब का नाम क्या था? कार्ल पोपर, याद कीजिए, इन्होंने 3 लोगों को क्रिटिसाइज किया है. एक तो हमारे प्लेटो बाबा हो गए, दूसरा हीगल और तीसरा कार्ल मार्क्स. हीगल और कार्ल मार्क्स को इसी में समेट देंगे हम, और कार्ल पोपर को ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है. देखिए, कार्ल पोपर इन हिज वर्क, क्या नाम था? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी. Yeah, the open society and its enemy. Yeah. In his work, Open Society and Its Enemy, criticized Marx' analysis of history. He said three philosophers. Philosophers, namely Plato, Hegel, and Marx, was pioneer. केवल मार्क्स है.
and Marx were pioneer of totalitarianism. Totalitarianism. The Marx analysis of history, is teleological, right? Did you get the idea meaning of teleological? क्लास में लिखवा देता हूं. Political purpose, political purposive explanation. और मार्क्स का था पर्पस. ठीक है, उसने कहा, रिमेंबर जब वो फेयरबाग के एक फेयरबाग थीसिस में वो एक लाइन कहता है कि इट्स माय बिजनेस इज नॉट ओनली टू इंटरप्रेट द हिस्ट्री और फिलॉसफी but also to change it, right? So Marx, so this man Popper said Marx analysis of history is a teleological, political purposive explanation of history, right? सर पॉलिटिकल का बात क्या है? हाँ, पॉलिटिकल का बात, पॉलिटिकल पर्पसिव मतलब पर्पस से. पर्पसिव एक मेथड होता है. यस, स्पेलिंग सर क्या है? PERPOSIVE, पर्पसिव. आप पर्पस देख करके, मान लीजिए कुछ आप ऑलरेडी आपका पर्पस है और उस हिसाब से आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं. इट्स PUR, ओके, PURPOSIV, पर्पस एक्सप्लेनेशन. देखिए, मार्क्स आइडिया promoted totalitarianism in such a way that his follower did not allow for criticism. It is enemy of the open society. He was enemy of open society, right? Marx called his own idea scientific, but criticized Hegel and labeled his idea as false consciousness. False consciousness. It is Lenin who considered Marx's idea as ultimate truth. And you can see totalitarian regime in Russia, right? Ultimate truth, and not allowed scrutiny. Right?
Karl Popper said that, para change. Karl Popper said that any scientific idea do it fast. कर लो उसके बाद. Done, Janvi and everyone. केवल मैं लिख रहा हूं यहां पर. आतिर हो गया खत्म. Okay. Karl Popper said that any scientific theory or knowledge Karl Popper said that Atir just cut and copy paste. Karl Popper said that any scientific theory knowledge must be ready for falsification. Right? Or critical examination. Or critical examination to be called as scientific idea. इसकी ये बात समझ में आया आपको? कोई भी साइंटिफिक आइडिया है, ये साइंटिफिक थ्योरी है, that we must be ready for, falsification, critical scrutiny, so that we can call them, right? He said Marx as economic determinist. Economic determinist. Marx was not only criticized by liberal philosopher, but also by his own follower. Gramsci said that Marx has left cultural component from his analysis. Another Marxist, Althusser, said that Marx's analysis of history and role of economic factor and the role of economic factor is overdetermined. बहुत ज्यादा emphasis दे दिया इकोनॉमी पे, overdetermined. Done. ये हो गया. क्रिटिसिज्म. क्वेश्चन जो भी आएगा उस हिसाब से आपको लिखना है. Right? Depends. अगर आएगा critical analysis of historical materialism, then you have to give criticism. But basic point, then criticism.
केवल डिस्कस रहे तो भी क्रिटिसिज्म कार्ल पॉपर का जाएगा वहां पर। ऊपर कर दूं, ये लो। ये लो, ऊपर नीचे करते रहो। चाय की चुस्की तो मिली नहीं, पता नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, सब लोग उधर है। डन? सुनीता डन, निकिता, असद, अभिनय, अभिनव डन? ओके, very good. Now we need to write about class struggle. सर एक क्वेश्चन था जी सर, ये जो क्रिटिसिज्म है कार्ल पॉपर का, ये मार्क्स के कौन कौन से क्वेश्चंस में हमें लिखना पड़ेगा, और ये हम लाइक कंक्लूजन में लिखें या बॉडी में लिखें सर? देखिए, जैसे अगर मैं क्वेश्चन दे दूं अभी, इस Yes, हिसाब sir. से आप बता लेंगे, Yes, right? sir. Althusser said, the role of economic factor in the Marx interpretation of history is overdetermined. Althusser was a Persian. He wrote a book called For Marx. Althusser was a Persian. He was a scholar. Right? Like Gramsci was a scholar. Right? Althusser wrote a book in 1960. His book name is For Marx. And where he criticized this idea. चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। Discuss Marx interpretation of history. Discuss Marx interpretation of history. Second, analyze Marx idea of base and superstructure. एक मिनट, यस, ये लो ऊपर चला गया। निकिता कहाँ? बस हो गया, ठीक है, डन। ओके, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। क्रिटिकली analyze Marx theory of historical materialism. अभी टेस्ट होगा तो उसमें भी दूंगा मैं। क्रिटिकली एनालाइज मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। फिर से लिखिए, Marx theory of historical materialism was
Marx theory of historical materialism was economically overdetermined. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से क्वेश्चन आएगा. डिस्कस कार्ल पॉपर criticism of Marx theory of historical materialism. Next question, right? Mode of production. Be ready for any kind of question that UPSC may ask. Mode of production is the determining factor in deciding social relation. जी और भी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट, बट आपको कोशिश किया जाएगा कि आपका दिमाग यहां पर ना लगे, बट आप जरूर इसको याद रखिएगा, ठीक है. और सर इनमें से क्रिटिसिज्म किसमें लिखेंगे? लाइक एक तो वो कार्ल पॉपर वाला तो है ही है, बट लेकिन सर समझ में आ गया. ये भी है, ये भी क्रिटिसिज्म भी आएगा, ठीक है. इसमें भी आइडिया आएगा, क्रिटिसिज्म भी आएगा. एनालाइज मार्क्स एज ए बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, इसमें प्योरली डिस्कस करना पड़ेगा. क्रिटिसिज्म बहुत कम लिखना, बस 2 लाइन में, लास्ट के 2 लाइन में लिख देना, ठीक है. इसमें भी 2 लाइन में लिखना है, लास्ट में पूरा एनालाइज करके लास्ट में लिख देना है, ठीक है. इसमें आपको अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है. और बताना पड़ेगा कि हिस्ट्री में मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, बेसिस सुपरस्ट्रक्चर क्या है, और सोशल रिलेशन कैसे चेंज होते हैं ड्यू टू चेंजेस इन मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. सर मतलब कि सर डिस्कस में सर थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना होगा. और हाँ, डिस्कस में आपको जो पूछा है वो बोलना है, क्रिटिसिज्म थोड़ा लिखना है. डिस्कस मार्क्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, आपको मार्क्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री लिखना है, और लास्ट के कुछ लाइन में आपको, हाँ, या कंक्लूजन में आप क्रिटिसिज्म बखेर दीजिए, ठीक है. जैसे ये पूछा एनालाइज मार्क्स आइडिया ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, आपको सुपरस्ट्रक्चर बताना है क्या ये, ठीक है, ठीक. और फिर आपको क्रिटिसिज्म देना है कि ये पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, और इसको ऐसे कार्ल पॉपर ने क्रिटिसाइज किया है, ग्रामसे ने क्रिटिसाइज किया. अब जब ये पूछ रहा है क्रिटिकली एनालाइज मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, आपको हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म पहले पैरा में ही खत्म कर देना है. सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, सेकंड पैरा आएगा पूरा क्रिटिसिज्म, थर्ड पैरा तक, ओके. इसमें भी क्रिटिसिज्म ही आएगा, कार्ल पॉपर, राइट, और इसका अल्थुसर का, ये तो पूरा क्रिटिसिज्म आएगा, यानी कि वही फर्स्ट पैरा. आंसर एक ही जैसा होगा, राइट. आंसर में कुछ जहां क्रिटिकली है वहां पर क्रिटिसिज्म पे ज्यादा फोकस करना है, जहां पे डिस्कस लिखा है वहां पे कॉन्सेप्ट को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट. एंड क्रिटिसिज्म पे माइनर, तो मेजर बैनर का इशू है, अदरवाइज आंसर ऐसे करना होगा. चलिए, क्रिटिसिज्म खाली कार्ल, हाँ, कार्ल पॉपर क्रिटिसिज्म में कार्ल पॉपर भी है, ग्रामसी भी मैंने 1-2 लाइन लिखाया है, अल्थुसर भी लिखाया है, निकिता. अल्थुसर कहता है कि जो रोल ऑफ इकोनॉमी है मार्क्स के इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में, दैट इज ओवर डिटरमाइंड.
हाँ, क्रिटिसिज्म करे बोलेगा तो सब सारा क्रिटिसिज्म लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक भी लिख दो, 2 लिखो अच्छा रहेगा, 3 लिखो और अच्छा रहेगा, डिपेंड्स ऑन जितना स्कॉलर। यस, क्वेश्चन नंबर 4, मैंने तो नंबर नहीं दिया, 1 2 3 4। यस, इसमें आपको इंक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल, यस, Marx's theory of historical materialism was economically overdetermined. बेसिकली ये क्रिटिसिज्म पूछ रहा है आपको, ये कार्ल पोपर का आइडिया पूछ रहा है, अल्थुसर का आइडिया पूछ रहा है। ओके, हाँ, एक क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन को इवैल्यूएट मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। अच्छा, यहां पर क्या करेंगे आप? राइट, तो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, राइट। इवैल्यूएट में आपको भी एनालिटिकल ही होना है, राइट, कि आपको सिंपल मार्क्स का थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म लिखना है, एंड देन यू हैव टू पुट क्रिटिसिज्म, एंड इन कंक्लूजन यू हैव टू से अबाउट द प्रैक्टिस, द हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, अबाउट द प्रैक्टिस, राइट। कुछ खतरनाक नहीं होगा, अब सिंपल क्लास स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल आज नहीं होगा। हमने तो 2 क्लास बना दिया, बुर्जुआजी एंड प्रोलेटारिएट, और उनके बीच का जो स्ट्रगल है वो आज नहीं होगा, ठीक है। आते थे so, बस क्लास स्ट्रगल कल करेंगे। कल फ्राइडे है, सैटरडे, देखो सैटरडे पता नहीं, मंडे तक तो खत्म कर दूंगा मैं। और क्या क्या बचा है आपके टॉपिक से, जैसे मैंने लिखवाया ना, ये कैन यू टेल मी आते? क्लास स्ट्रगल था, दूसरा कम्युनिज्म बचा है, सोशलिज्म कम्युनिज्म, हाँ, सरप्लस वैल्यू बचा है यार, सरप्लस वैल्यू बचा है, और स्टेट, यही बचा है हमारे पास। देखियो कल 2 अगर हो जाता है, कॉन्सेप्ट में, की कॉन्सेप्ट में जी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म तो हो गया सर हमारा, ठीक है। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका। अब बचा हमारा पास थ्योरी ऑफ क्लास, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू जिसको दास कैपिटल, और स्टेट। यही 4 बचा है ना? जी सर। कल फ्राइडे है, चारों खत्म हो जाएगा ना? कल फ्राइडे है, कल 2 खत्म कर लेंगे। मैं आता हूं कि 2 खत्म करूंगा, हो पा नहीं पाता है एनीवे, और परसों 2 खत्म। अगर आप लोग साथ देंगे तो कल 2, परसों 2, फिर मंडे को हम ग्राम से शुरू करेंगे। नहीं, कल नहीं हो पाया तो मंडे को खत्म होगा, सॉरी सैटरडे खत्म नहीं हुआ तो मंडे को खत्म होगा। सर संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेना सुबह 8 से 9:30। तुम क्या चाहते हो, डेली मजदूरी करूं मैं? हाँ, यही चाहते हो? बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट हो जाएगा। ऑलरेडी प्रोलेटारिएट है, ठीक है। चलिए, सी यू देन ऑन मंडे, सॉरी मंडे नहीं, टुमारो। So take care everyone. Have a nice day. Thank you, Nikita.